So welcome to the next part of it is the next part of immune system. So I hope you enjoyed that you gone through the immune system first part, because that was the basic one that is very important. What are the organs, what are the different lines of action when infection or microbes attack the body. So now we are going through the next part. Now it is inflammatory response. When a person gets injury, it brings foreign matter to the tissue. Damage cell initiate the formation of blood clot. Inflammation is good thing. It brings in blood and dilates capillaries so that the more immune system cell gets into the infection. Microbes release their own toxins. Mast cell and basophil release histamine. Chemicals form microbes and histamine dilates the capillaries and increase permeability of the capillaries. More blood flows to that area, making it red and warm, and fluid leaks and cause swelling. This reaction is called inflammatory response. The plasma at the injury site dilutes microbes toxins and lessen their effect. Its fibrin forms a network that occludes the lymphatic channel and limit the spread of microorganism. तो प्लाज्मा जो इंजरी साइट का प्लाज्मा है वो माइक्रोब्स टॉक्सिन्स को डाइल्यूट कर देगा और उनके इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करेगा. इट्स फाइब्रिन फॉर्म्स अ नेटवर्क. ये फाइब्रिन बनता है, हमें मालूम है, जब ब्लड क्लॉट बनेगा. एंड द न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्टेड टू द साइट ऑफ इंजुरी. तो न्यूट्रोफिल्स अपने आप जहाँ पे इंजुरी है वहाँ चले जाएंगे. एंड इन्फेक्शन बाय द केमिकल बाय इंजर्ड सेल इलेबरेटेड बाय द बैक्टीरिया. न्यूट्रोफाइल जब रीच करेंगे उस साइट पे वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा. माइक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट एक्शन. और अब माइक्रोफेजेस भी वहाँ पहुँच जाएंगे. मैक्रोफेजेस के साथ साथ मोनोसाइट्स पहुँचेंगे एंड दे क्लीन अप ऑल द टिश्यू. और वो अपने टिश्यूज़ को क्लीन करता रहेगा. एंड रिमेन्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स. सर्टन सब्सटेंसेस स्टिमुलेट फैगोसाइटोसिस कॉल्ड ऑप्सोनिन्स. जो ऑप्सोनिन एक ऐसे सब्सटेंस वहाँ पे मिलेंगे आपको जो कि फैगोसाइटोसिस को डेवलप करेगा. नेक्स्ट वन इज पस फॉर्मेशन. If neutrophil finds a foreign particle, it will engulf it, releasing the enzyme hydrogen peroxide and other chemicals from its granules to kill the bacteria. If neutrophil finds अगर neutrophil को कोई भी foreign particle मिलता है तो वो उसे खा जाएगा और रिलीज करेगा enzyme, hydrogen peroxide, chemicals from its granule to kill the bacteria. वो सब कुछ रिलीज करेगा, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा. इफ़ इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन, अगर बहुत सीरियस इन्फेक्शन है पस बन जाएगा. तो आपने देखा होगा कई बार पस होता है, वाइट कलर का जो पस बन जाता है. पस क्या है? पस इज डेड न्यूट्रोफिल एंड सेल्यूलर डेब्रिस. Many neutrophil and macrophages are killed by toxins released by highly invaders. The dead phagocytes and microbes are trapped by still phagocytes and they form protective barrier. Dead phagocytes, enzymes, fluid, protein, damaged tissue, etc. leak from the capillaries and leave the body in the form of pus. This is sure sign of infections. तो जब infections होती हैं तो dead phagocytes हैं, enzymes हैं, fluid है, protein है, damaged tissues हैं, ये सारे के सारे capillaries में से निकलते हैं. That means your body has infection. Due to injury out of bite, cut or bite, the inflammatory responses develop. This is localized or systematic. The localized response is confined to the injury site. WBC count increases. The body temperature causing fever increases due to the toxins produced by the pathogens and the by protein endogenous pyrogens. When large quantity of pyrogen reaches brain, the body thermostat is reset टू हाई टेम्परेचर. तभी अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो आपका बॉडी टेम्परेचर रेज करना नेचुरल है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट. इट इज द सीरीज ऑफ प्रोटीन्स. देर आर ओनली हैंडफुल ऑफ प्रोटीन्स, दे आर फ्लोटिंग. द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड by and work with antibodies. They cause breakage of the cell. वो तोड़ देंगे सेल्स को.
and signal to phagocyte that a cell need to be removed, और signal देंगे phagocytes को कि इस cell को remove करना ज़रूरी है. Interferons, it interferes with the virus and it produced by most of the cells. तो बहुत सारे cells जो हैं, mostly all the cells are all cells produce interferons. Interferons, like antibodies, both function almost same है and complement our protein, and their job is to let the cell signal to one another. It produce protein that help prevent viral replication. Interferons भी वायरस के साथ इंटरफेयर करेगा एंड बहुत सारे सेल्स जो है इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं. इंटरफेरॉन्स, एंटीबॉडीज़, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका जॉब होता है सेल सिग्नल करना, इज टू लेट द सेल सिग्नल टू वन अनदर, जो कि प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन टू प्रिवेंट द वायरल रेप्लिकेशन, कि वायरस की रेप्लिकेशन ना हो. स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. अब स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक फॉरेन मटेरियल्स. ठीक है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक फॉरेन मटेरियल को के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक चीज़ पे काम करेगी. The lymphocytes have an ability to recognize own cell and macromolecules from which are foreign invaders. It tolerates self and destroy non-self. The system is called major histocompatibility complex. तो specific defense mechanism specific foreign particles पे अटैक करेगा. ठीक है, and provide करेगा protection. लिम्फोसाइट्स की एक एबिलिटी है, लिम्फोसाइट अपने सेल को, अपनी बॉडी के सेल को और बाहर के सेल को ईजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, और इसीलिए वो अपने सेल्फ के सेल को रखता है और फॉरेन के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है. इस सिस्टम को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज़ अ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. MHC molecules are important components of immune response. They allow cells that have been invaded by an infectious organism to be detected by the cell. एक ऐसा ल्यूकोसाइट एंटीजन मॉलिक्यूल है MHC मॉलिक्यूल. ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इम्यून रिस्पॉन्स का. ये सेल को अलाउ करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड डिटेक्ट करता है सेल्स को. इम्यून सिस्टम के सेल्स को टी सेल्स कहा जाता है. द टी सेल रिकॉग्नाइज द फॉरेन पार्टिकल अटैच टू MHC. अगर MHC के ऊपर कोई भी फॉरेन पार्टिकल लग गया है तो टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड एन एक्शन दैट स्टिमुलेट टी सेल ईदर टू डिस्ट्रॉय एंड क्योर द इन्फेक्टेड सेल. तो एक एक्शन एक स्टिमुलेट करेगी चीज़ और उसमें कहेंगे या तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या उस सेल को ठीक कर दिया जाए. तो MHC इज़ अ सेट ऑफ जीन्स that code for cell surface glycoprotein. These glycoprotein marks body cell as self and divided into main classes. Class 1 MHC molecule are found on the surface of every cell, and class 2 MHC molecules are confined to few specialized cell types such as macrophages, beta cell, activated T cell. तो MHC क्या है? MHC is a set of genes that code for the cell surface glycoproteins. These glycoprotein mark the body cell as self and divided into two main classes. तो दो तरह की होती हैं. एक MHC क्लास वो है जो कि सरफेस एवरी सरफेस ऑफ द सेल, हर एक सेल के सरफेस पे लगा रहेगा. और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जो है स्पेशलाइज्ड सेल पे काम करेगा, बीटा सेल एंड एक्टिवेटेड टी सेल. T cell surface CD4 CD8 enhances the interaction between antigen presenting cell and killer T cells and APC and helper T cell as cell. एंटीबॉडीज़ are produced by plasma cells. जो आपके प्लाज्मा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़. ये वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं एंड स्पेसिफिक एंटीजेंस पे काम करते हैं. फॉरेन मैटर दैट एंटर्स द बॉडी elicit immune response by lymphocytes called an antigen
or immunogen. It stimulates the immune system to produce chemicals or special cells to destroy the antigen. These protective cells or chemicals is called antibody. Structure of antibody. Antibody has two pair of peptide chain linked by disulfide bonds called heavy chains, and short chains are called light chains. These antigens binding site is at N-terminal end of polypeptide chain. Splitting of the molecule is done by proteolytic enzyme, and the protein molecule present on the surface of the matter act as antigen, and sometimes carbohydrate and lipid act as antigens. Antigen and antibody fit together in lock and key system and form complex. Antibodies are classified in 5 classes: immunoglobulin A, immunoglobulin D, immunoglobulin E, immunoglobulin G, and immunoglobulin M. So A, D, E, G, M. A is present in the secretions, protect mucosal surface. It is found in tears. Tears means आपका आंसू, saliva, gastrointestinal secretions. Immunoglobulin D जो है वो B lymphocytes के ऊपर मिलेंगे आपको, on the surface of B lymphocytes, along with IgM plays role in AG recognitions. E protect करेगा आपको escaped IgA. It releases mast cells. So immunoglobulin E जो है mast cells को release करता है. These granules contain chemical that lead to inflammatory reactions and chemotactic migration of granulocyte. Immunoglobulin G, it is a major defense against bacteria and toxins. It is major Ig 80% of the body and can cross the capillary very easily and cross placenta secreted into the milk that transfer immunity from mothers to child. तो G is very important because वो immunity जो है mother से child के पास जाती है. Immunoglobulin M, it protects against bacteria, gives an immune response present on the lymphocytes. Body defense mechanism दो तरह के हैं. One is innate, one is acquired. Innate immunity, it refers to the basic resistance in disease that a species possesses. जो आपके पास naturally है, आपका acquired नहीं है, that is a innate immunity. Already आपके पास है. The first lines of defense against the infection. Characteristics क्या है? Responses are broad spectrum. There is a memory or lasting protective immunity. There is a limited stock of recognition molecules. The responses are phagogenetically ancient. Innate immune response involve phagocytic cells, cell that releases inflammatory mediators, natural killer cells, and molecules such as complement protein, acute phase protein, and cytokinins. तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. And just acute phase proteins, mediators, these are the names you need to write down in the answer sheets. Okay, all the best for that. Next is phagocytosis. So what is phagocytosis? हमने पढ़ा है phagocytes क्या होते हैं, phagocytosis क्या है. It is a process of the ingestion of particulate material including whole pathogenic microorganism. आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा का पूरा इंजेस्ट कर लेती हैं जो आपका टॉक्सिन मटेरियल बॉडी में एंटर हो गया. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड्स अराउंड द particulate material to form the large vesicles called phagosomes. It is carried by neutrophils and macrophages. Neutrophils are highly effective against pus-forming pyrogenic bacteria. These monocytes and macrophages together contribute to phagocyte system. Macrophages are most effective. तो सबसे ज़्यादा effective जो हैं वो macrophages हैं. What is the mechanism of phagocytosis? In phagocytosis, the organism is entrapped in the vacuole known as phagosomes. These are the substances that are of two types: those which are dependent on oxygen mechanism and those which are oxygen independent mechanism. तो दो तरह के substances हैं. वो substance जो ऑक्सीजन जिनको चाहिए वर्क करने के लिए और दूसरे जो हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन वर्क करने के लिए नहीं चाहिए. Complement system. What is complement system? To remove microorganism from phagocytosis.
require phagocytes at the right place. अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइटोसिस के ज़रिए से हटाना है तो हमें phagocytes भी तो चाहिए. The organism should adhere to phagocytes to deal with it with one or more non-specific defense mechanism is found in plasma. It is known as complement system. Complement system contains 20 proteins when triggered can enter into cascade reactions. This system helps to handle microbial invasions by 3 mechanisms. तो 3 mechanism उनके पास होते हैं जिनसे वो हैंडल करेगा माइक्रोबियल इन्वेजन, तो इन्वेजन ज़्यादा ना हो. Some components coat microorganisms. These organisms with such coat can be easily phagocytosed because of the receptors that are similar for the same components. So क्या होता है कि सम कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कोट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. कोट करने से वो इजीली रिसेप्टर्स के हाथ में आ जाते हैं. सम कंपोनेंट्स स्टिमुलेट द लीथल मैकेनिज्म्स और phagocytes released earlier. They also release mast cells and basophil granules. तो basophil और mast cell का भी बहुत बड़ा रोल है. तो कंपोनेंट्स क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, लीथल मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा phagocytes में. एंड दे ऑल्सो रिलीज, और क्या रिलीज़ करेंगे, मास्ट सेल्स रिलीज़ किया जाएगा, बेसोफिल ग्रेन्यूल्स रिलीज़ किया जाएगा. द मेजर इफेक्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स आर वेसोडाइलेशन. तो मेन क्या होता है, वेसोडाइलेशन, आपका डायलेशन हो जाता है, बड़ी हो जाती है वेसिकल्स. एंड कीमोकैटाक्टिक माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड eosinophils to the site of infection. Complement pathway leads to the formation of membrane attack complex that stab a hole into microbial cell wall that lead to the entry of water and sodium into microbial lead to lysis. Lysis means to turn up. So now next one is humeral mechanism. This helps in innate immunity. These are acute phase proteins. After infection there was a rise in concentration of several plasma protein. Infection हुआ और plasma protein rise होने लग जाते हैं. The best known amongst them are C-reactive protein. इनको बोलते हैं C-reactive protein means CRP. That adheres to the surface of, ये adhere microorganisms के surface पे ही चिपक जाता है. These organisms activate complement system and in turn facilitate the phagocytosis. तो ये phagocytosis को इनिशिएट कर देता है. इंटरफेरॉन्स हमें पता है हर सेल के पास इंटरफेरॉन्स होता है. इंटरफेरॉन्स तब आएंगे जब फॉरेन पार्टिकल्स आपके पास आपके सेल्स के अंदर आते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो है वो रिलीज़ करेगा इंटरफेरॉन्स अल्फ़ा, बाकी सारे रिलीज़ करेंगे इंटरफेरॉन्स बीटा इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वेयर दे फॉर्म, जहाँ पे वो एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाएंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम हो जाता है. दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव रिंग ऑन इनफेक्टेबल cells limiting infections. Natural killer cells, they are the large size lymphocytes to kill the virally infected cells, and some cells acquire special glycoprotein on their surface that signals their cell. They form trouble and need help. NK cells are receptive to these cry as help. They have surface protein that's similar to ones that they have glycoprotein coatings. Here there is a drawback that host cell itself gets sacrificed. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो होस्ट सेल हैं वो कभी भी अपने सेल और फॉरेन सेल में डिफरेंस नहीं कर पाते. दैट इज़ वाई होस्ट सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Contribution of eosinophils, they are specially equipped to deal with the parasites. The coating of helminths and some components facilitates its adherence to eosinophils. This release particles that cause death. So now I hope you enjoyed that and you know what exactly the concept of immune system, antibodies, antigens, and please prepare yourself for the examination better way. Write in points to get more marks and very clear to the point. And stay safe, stay protected, but don't forget to share it with your friends who needs help in that. All right, thank you so much. Bye bye, take care.